So hello everyone, welcome to the class of S.education. So आज आम डिस्कसन करवा स्पेलिंग मिस्टेक किछटा इम्पोर्टाट वर्ड्स जोटा कि हेल्पफुल हम आगामी जहाँ भी एग्जाम्स अच्छी एवं जदि भी किसी हेल्पफुल होची देन सब्सक्राइब निहाती करेंगे लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे वीडियो को लास्ट पर्यंत निहाती देखिए. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन देला फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पचारि दैट इज आसेसेबल. तो आसेसेबल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आम जानीचे. तो ऑप्शन देखिबा. तो आसेसेबल स्पेलिंग है फर्स्ट वन ए हूँ राइट आंसर. आसेसेबल स्पेलिंग अच्छी आमर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर. तो जो आसेसेबल अच्छी फर्स्ट ACCSSIBLE that is correct answer. So option A is right answer. Next है find the correctly spelled word of accommodations. So accommodations जो correctly spelled कौन. तो accommodations जो ऑप्शन देला A B C D सबुथिरे accommodation pronunciation सेम अच्छी बट ये आमर कोटा स्पेलिंग करेक्टली अच्छी कोटा. सो accommodation स्पेलिंग ऑप्शन सी रही दैट इज ACCOMMODATION accommodations. दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनकनविनियंस. इनकनविनियंस जो वर्ड अच्छी तार करेक्टली स्पेल्ड कोटा दैट इज ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर इनकनविनियंस. So ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर. ऑप्शन बी हूँ रॉन्ग आंसर. ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर. तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन सी हूँ मोर राइट आंसर इनकनविनियंस INCONVENIENCE इनकनविनियंस. तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर. नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ कमिशनर. तो कमिशनर आमर ये कौटारे करेक्टली स्पेल्ड हो ऑप्शन रे. तो सबुथिरे तो प्रोनाउंसिएशन सेम अच्छी बट हमारा स्पेल कोटा ठीक अच्छे. तो कमिशनर स्पेलिंग हूँ COMMISSIONER. तो कौटी अच्छी ना ऑप्शन बी रोची ठीक अच्छी स्पेलिंगटा. तो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर. नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिसलेनियस. तो मिसलेनियस करेक्टली स्पेल्ड कोटा अच्छी दैट इज ऑप्शन सी. दैट इज हमार ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर. तो मिसलेनियस स्पेलिंग कौन MISCELLANEOUS मिसलेनियस. दैट इज ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ अचीवमेंट. तो अचीवमेंट आमर करेक्टली स्पेल्ड वर्डटा कह अच्छी. तो अचीवमेंट स्पेलिंग कौन ना ACHIEVEMENT. तो दैट इज ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर. आमर अचीवमेंट ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर. दैट इज करेक्ट आंसर हूँ अचीवमेंट करेक्टली स्पेल्ड. तो नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ अमेच्योर. तो अमेच्योर करेक्टली स्पेल्ड कोटा हम दैट इज ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर. दैट इज अमेच्योर स्पेलिंग हूँ AMATEUR अमेच्योर. तो AMATEUR अमेच्योर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है. देन नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ गायनेकोलॉजी. तो गायनेकोलॉजी आमर ऑप्शन कोटे राइट आंसर हम. तो गायनेकोलॉजी स्पेलिंग है गायनेकोलॉजी. तो GYNAECOLOGY. दैट इज ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर गायनेकोलॉजी. गायनेकोलॉजी दैट इज ऑप्शन ए बी हूँ राइट आंसर. नेक्स्ट हूँ फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ सुपरिटेंडेंट. तो सुपरिटेंडेंट स्पेलिंग कोटा ठीक अच्छी. तो स्पेलिंग हूँ तार सुपरिटेंडेंट SUPERINTENDANT सुपरिटेंडेंट. दैट इज ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर सुपरिटेंडेंट. दैट इज
SUPERINTENDANT superintendent, that is B होची right answer. Next होची find the correctly spelled word of vacuum. तो vacuum रो correctly spelled word कोड़ा तो ऑप्शन एटी कोड़ा हम राइट आंसर. तो vacuum रो स्पेलिंग होची VACUUM, that is correct है ऑप्शन सी, that is ऑप्शन सी है राइट आंसर vacuum रो स्पेलिंग. नेक्स्ट होची find the correctly spelled word of instantaneous. तो instantaneous रो correctly spelled word कोड़ा हवा, that is ऑप्शन बी होची राइट आंसर, that is instantaneous. instant INSTAN instantaneous ANEOUS instantaneous, that is option B होची राइट आंसर. नेक्स्ट है find the correctly spelled word of indispensable. तो indispensable रो correctly spelled कोड़ा हवा, that is indispensable, that is INDESPENSABLE indispensable, that is option B होची राइट आंसर indispensable रो. नेक्स्ट होची find the correctly word of committee. तो committee रो correctly word कोड़ा हवा, that is COMMITTEE, that is option A होची राइट आंसर. तो ऑप्शन सी रे मध्य सेम अच्छी कमिटी रो स्पेलिंग. तो ऑप्शन गोटे एटा काटी दिंतु बी सीटा. तो एटा होची राइट आंसर. नेक्स्ट होची फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस रो स्पेलिंग हमकु एठी पचारि छि जोटा कि करेक्टली स्पेल्ड. तो मेंटेनेंस रो स्पेलिंग होची MAINTENANCE, that is ऑप्शन बी होची राइट आंसर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी. नेक्स्ट होची ज्वेलरी. तो ज्वेलरी स्पेलिंग को हला, that is JEWELLERY ज्वेलरी, that is ऑप्शन डी होची राइट आंसर ज्वेलरी JEWELLERY ज्वेलरी. नेक्स्ट होची फाइंड द स्पेल्ड वर्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ प्रोफेशनल वर्ड, that is प्रोफेशनल रो कोटा हवा करेक्टली स्पेल. तो प्रोफेशनल स्पेलिंग है PROFESSIONAL, that is ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर प्रोफेशनल. नेक्स्ट होची चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ सैक्रिफाइस. तो सैक्रिफाइस रो करेक्टली स्पेल्ड कोड़ा ना SACRIFICE सैक्रिफाइस. तो ऑप्शन कोटा हवा सैक्रिफाइस, that is ऑप्शन ए होज राइट आंसर SACRIFICE सैक्रिफाइस. नेक्स्ट होची चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ लिeutenant. तो लिeutenant रो कोडा स्पेलिंग राइट आंसर. तो लिeutenant रो स्पेलिंग हमर अछि LIEUTENANT लिeutenant, that is ऑप्शन डी होज राइट आंसर लिeutenant. तो लिeutenant LIEUTENANT लिeutenant होची करेक्ट आंसर इट. नेक्स्ट होची चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ मुस्टाच. तो मुस्टाच रो करेक्टली कोटा. तो मुस्टाच रहला MOUSTACHE, that is ऑप्शन डी होची राइट आंसर मुस्टाच MOUSTACHE मुस्टाच. नेक्स्ट होची द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ जुबिली. तो जुबिली रो करेक्टली स्पेल्ड कोड़ा, that is JUBILEE, that is ऑप्शन सी होची राइट आंसर जुबिली JUBILLEE जुबिली. नेक्स्ट होची फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ ग्रामर. तो ग्रामर रो हमें करेक्टली स्पेल्डटा कहया. ग्रामर है GRAMMER ग्रामर, that is ऑप्शन बी होची राइट आंसर. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ होमोजेनियस. तो होमोजेनियस रो स्पेलिंग कोड़ा ठीक होची. तो होमो, that is HOMO होमोजेनियस GENEOUS, that is होमोजेनियस, that is ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑफ इम्प्लीमेंट. तो इम्प्लीमेंट रो स्पेलिंग होची IMPLIMENT इम्प्लीमेंट,
that is option implementer, that is option B is the correct answer. So I have confused from one option A or B implement so to comment me कोटा ठीक है. Next होची choose the correctly spelled word of absence. तो absence रो कोटा ठीक अच्छी आंसर correctly spelled. तो absence रो correctly spelled होची ABSENCE absence. No, that is B. No, that is absence. Option A is right answer. ABSENCE absence. Option A is right answer. Next होची find the correctly spelled word of assessment. Assessment रो correctly spelled कौन? तो assessment रो correctly spelled होची ASSESSMENT. That is option A होची correct word. ASSESSMENT assessment. सो होप करुँच कि समस्त को ये वीडियोटी भल लगी जदि भी भल लगी देन लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे